वेलकम बैक गाइस। अब हम करेंगे एक नया टॉपिक काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर क्वेश्चन 1 to 5 इन दिस वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग, ये जो पास पेपर्स हैं, यू कैन बाय देम एट 16th August। और हर पास पेपर की जो चैप्टर होगा ना, उसके फ्रंट पेज पे देयर विल बी अ बार कोड, जो आप अगर स्कैन करोगे, इफ यू स्कैन दैट बार कोड, इट विल टेक यू टू अ लिंक ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और आप मेरे साथ साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। So stay tuned for that. और उसके उसके साथ with that past paper you will get a specific जगह जहां नोट्स बने होंगे of the most important questions, right? तो वो भी आप कर सकते हो। So stay tuned for that. Start करते हैं क्वेश्चन 1। Mercury is a liquid. The diagram shows a simple mercury barometer which height is a measure of atmospheric pressure। अच्छा ठीक है ना। अगर ना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा मरकरी का, फॉर एग्जांपल इट्स अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मरकरी भी बैठी हुई है। बट इफ यू टेक इट टू एल्टीट्यूड, अगर इसको आप एक पहाड़ पे ले जाते हो, राइट, अगर इसको आप पहाड़ पे ले जाते हो, देयर विल बी लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जितना इसको ऊपर ऊपर लेके जाओगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे आएगा। एंड द लेंथ ऑफ सी विल चेंज। जो लेंथ ऑफ सी है ना, the height of the mercury, that will change. So C is the right answer. Moving on. Question 2. A gas is in a sealed container of constant volume. The gas is heated and the pressure of the gas on the wall of the container increases. How do the particles of the gas cause this increase in pressure? So for example, this is a jar, और इसके अंदर there will be, for example, एक second, my bad, there will be 7 particles, for example 7 particles होंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7, and these particles will be constantly moving, ठीक है ना, and hitting each other or hitting the lid, right? So अगर इसके अंदर हीट आए, अगर हीट इज प्रोड्यूस्ड, अगर एक नीचे मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टोव रख दिया जाए and the heat increases, so the particles will have more energy, more kinetic energy, and the particles will start moving faster and faster, so they will collide more with each other and the glass jar, making the pressure increase, ठीक है ना। How do the particles of the gas cause this increase in pressure? Because they hit the container walls more frequently. If they hit each other, the pressure won't increase. If they expand, the pressure more expand. If they vibrate faster, that doesn't correlate to more pressure. So question 3. The more energetic particle escape from the surface of a liquid. Which term describes this process? This is probably referring to evaporation. Evaporation में पहला पार्ट होता है the particles gain energy. अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लेक फ्रंट, ठीक है ना, और इसमें गर्मी है, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट लग रही है, द मोर, अच्छा सनलाइट फॉर एग्जाम्पल यहाँ लग रही है, as the particles gain more kinetic energy eventually they'll be able to escape the surface, and escape करके they will become gaseous molecules, gas particles बन जाएंगे वो, rather than being liquid. So that will eventually lead for the lake to dry up, right? So B is the right answer. That evaporation is the cause. Evaporation is the process. Question 4. A person cannot open a glass jar which has a metal lid. After the lid is held under hot water for a few seconds, the jar opens easily. What is the explanation for this? अच्छा ठीक है, for example, there is a, for example, this is a metal cube, ठीक है ना, metal cube में there will be a lot of particles, ठीक है ना, there will be a lot of particles very densely packed. मैं थोड़े से बना रहा हूँ because I don't have much time.
I will make a few particles, right? So for example, these particles will start to vigorously vibrate. When these particles vibrate, they'll start to expand in which container they are. So for example, if this is a metal cube, the metal cube will slightly enlarge. मेटल क्यूब स्लाइटली बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, लाइक नॉट वेरी नोटिसेबल, बट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंक्रीज. ठीक है ना. इट विल ग्रो अ बेट. ठीक है ना. तो दैट विल कॉज द मेटल क्यूब टू इंक्रीज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा, नॉट द मास. जस्ट द वॉल्यूम विल इंक्रीज. एंड अगर इस केस में वी टॉकिंग अबाउट द मेटल लिड, तो मेटल लिड जब थोड़ी सी एक्सपैंड होगी, इट विल लूसन अप and the glass will easily open. Jar, I mean. So the glass jar, the metal lid contracts, the metal lid expands. So D is the right answer. Question 5. Which row describes the arrangement of particles and the forces between the particles in a solid? A solid में particles जो होते हैं, they are regularly arranged. The arrangement of particles are regular, and the forces between particles are strong. So therefore A is the answer. Very easy question. So that's it for this video. I hope you enjoyed. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz. And another interesting fact मैं बताना भूल गया है, मैंने यहाँ लिखा हुआ था, that due to thermal expansion, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है. Due to thermal expansion of the metal that occurs during the summertime, the Eiffel Tower grows an average of 15 centimeters, which is 6 inches during the hottest month. So जो Eiffel Tower है, that will increase in height due to thermal expansion, which is caused by the sun. Thermal expansion sun की वजह से होता है. That causes the metal to be hotter. और जब hot होगा, it will vigorously vibrate, right? It will vigorously vibrate, or it will cause the metal to expand. ठीक है ना. So for example, this is the Eiffel Tower. So it will cause the metal to expand. So yeah, that's it. Allah Hafiz.